अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकवर्षपूर्तिः। अद्य वर्षपर्यन्तम् आयोजयिष्यमाणस्य स्मरणोत्सवस्य स्यात् शुभारम्भः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात् स्मरणोत्सवस्य एतस्य शुभारम्भम्। बिहार निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय अद्य औरंगाबाद भभुआ स्थलयोः प्रधानमन्त्री मोदी कुर्यात् प्रचारम्। अमितशाहः, नीतीशकुमारः अथ अन्ये अपि महासंयुतेः नेतारः कुर्युः सजवं निर्वाचनप्रचारम्। अद्य प्रभृति दिनद्वयं यावत् वाराणसी नगरं भविष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। चतुर्भ्यः नववन्दे भारत रेलयानेभ्यः प्रदर्शयिष्यति असौ हरितं ध्वजम्। कर्णाटकराज्ये अद्य कृषकनेतृभिः समं संवादं कुर्यात् तत्रत्यः मुख्यमन्त्री। संवादः नैव सफलः भवति चेत् राज्ये आन्दोलनं करिष्यन्ति कृषकाः। इक्षोः प्रतिटनभारमितं मूल्यं 3,500 भवेत् इति कृषकाणाम् अभियाचना। भारतेन समं व्यापारविषये संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यं सुष्ठु समाचरति वार्ता। प्रधानमन्त्रिणं सुष्ठु मित्रत्वेन प्रतिपादितवान् असौ। उक्तवान् शीघ्रमेव करिष्यति भारतयात्राम्। क्रीडावार्तायां शतरंज विश्वकप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः तृतीये चरणे प्रविष्टः भारतस्य वेदितः गुजराती अर्जेन्टीना देशस्य फॉस्टिनो ऑडो इत्येतं पराजितवान्। तावत् प्रणव प्रणेशयोः अपि प्रतियोगितायाः अग्रिमे क्रमे प्रवेशः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः नवदिल्ली स्थिते इंदिरा गांधी प्रांगणे राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य वर्षपर्यन्तम् आयोज्यमानस्य स्मरणोत्सवस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी एकं स्मारकं, प्रेषपत्रं, नाणकं च प्रकाशयेत्। एषः कार्यक्रमः अद्य प्रभृति समारभ्य अग्रिमे वर्षे नवम्बर मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् आयोजितः भविष्यति। कालातीतरचनायाः सार्धैकवर्षपूर्तिमुपलक्ष्य वर्षपर्यन्तं प्रवर्तमाने एतस्मिन् स्मरणोत्सवे अधिदेशं विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। अत्र आयोज्यमाने मुख्य समारोहे समाजस्य समेषां वर्गाणां सहभागिता सममेव सार्वजनिकस्थानेषु प्रातः 50 निमेषाधिक 9 वन्दे मातरम् इत्येतस्य गीतस्य पूर्णसंस्करणस्य सामूहिकं गानं समायोजयेत्। भवद्भिः अवधेयं यत् बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा रचितम् अस्माकं राष्ट्रियं गीतमस्ति वन्दे मातरम्। एतस्य गीतस्य रचना अक्षयनवम्याः पावनातिथौ 75-अष्टादशशततमे वर्षे नवम्बर मासस्य 7 दिनाङ्के जाता आसीत्। मातृभूमिं शक्ति, समृद्धि, दिव्यतायाः च प्रतीकत्वेन प्रकाशितेन एतेन गीतेन भारतस्य एकतायै, आत्मगौरवाय, जागृतभावनायै च अभिव्यक्तिः प्रदत्ता। बिहार विधानसभायाः प्रथमचरणीयं मतदानं ह्यः शान्तिपूर्णरीत्या सुसम्पन्नं जातम्। तावत् प्रथमे चरणे कीर्तिमानत्वेन 66.64% यावत् मतदानं समङ्कितम्। एतेन सहैव 14,13% प्रत्याशिनां भाग्यनिर्धारणमपि सम्प्रति नवम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणार्थं विभिन्नानां दलानां नेतारः द्रुतगत्या मार्गीयं प्रचाराभियानम् अथ जनसभाः कुर्वन्तः सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता अथ बिहार राज्यस्य जनसभाद्वयम् असौ सम्बोधयेत्। तावत् प्रधानमन्त्री अद्य मध्याह्ने 1:30 औरंगाबाद क्षेत्रे जनसभां कुर्यात्। तदनु प्रधानमन्त्रिणः अपराह्ने 3:30 भभुआ क्षेत्रे जनसभा निर्धारिता अस्ति।
तत्र हि प्रधानमन्त्री कैमूर जनपदस्य भभुआ विधानसभासनाय एनडीए इत्येतस्य प्रत्याशिनः समर्थने प्रचारं कुर्यात् इति प्रधानमन्त्रिणा समं तत्र निर्धारितमस्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति वाराणसी नगरस्य यात्रायां भविष्यति। तत्र हि प्रधानमन्त्री 4 नवीनानि वन्दे भारत रेलयानानि हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। एतानि वन्दे भारत रेलयानानि बनारस खजुराहो लखनऊ सहारनपुर फिरोजपुर दिल्ली एर्नाकुलम बेंगलुरु इत्येतेषु मार्गेषु सञ्चालितानि भविष्यन्ति। एतेन सहैव एतानि रेलयानानि यात्रासमये अल्पताम् आनेष्यन्ति अथ क्षेत्रीय गतिशीलतामपि संवर्धयिष्यन्ति इति। कर्णाटक राज्यस्य मुख्यमंत्री अद्य कृषकनेतृभिः समं संवादं कुर्यात्। एषः संवादः यदि नैव सफलः भवति चेत् तत्र राज्ये कृषकाः आन्दोलनं करिष्यन्ति। अवधातव्यमस्ति यत् इक्षोः प्रतिटन भारमितं मूल्यं 3,500 भवेत् इति अस्ति कृषकाणाम् अभियाचना। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या मुम्बईनगर्याम् ऐषमः 12 SBI बैंकिंग इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधितवती। स्वीये संबोधने निर्मला सीतारमणवर्या आत्मनिर्भरतायाः 5 स्तम्भान् रेखाङ्कितवती। असौ आर्थिक सामाजिक प्रौद्योगिकी रणनीतिक पर्यावरण क्षेत्राणि आत्मनिर्भरतायाः 5 स्तम्भत्वेन परिभाषितवती। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः गतदिने राजस्थानराज्यस्य कोटानगरस्य तलवंडी क्षेत्रे नवनिर्मितस्य राजकीयायुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सायाः एकीकृतस्य महाविद्यालयस्य लोकार्पणम् अकरोत्। भूयोपि 22 कोटिरूप्यकाणां मूल्येन निर्मिते एतस्मिन् अत्याधुनिके महाविद्यालये 7 संख्याकानि व्याख्यानभवनानि, प्रयोगशालाः, पुस्तकालयाः, योगविभागाः अथ नैके प्राशासनिक कार्यालयाः सन्निहिताः सन्ति। तावत् एतस्मिन् नवीने भवने शल्यचिकित्सां, कायचिकित्सां, पञ्चकर्माणि समेत्य 14 संख्याकानां विभागानां सञ्चालनं भविष्यति। अत्रावसरे लोकसभाध्यक्षः कथितवान् यत् एकमात्रमेव एतस्मिन् आयुर्वेद महाविद्यालये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धत्याम् अनुसन्धानेन समं वर्तमान आवश्यकतानुगुणं चिकित्सकाः अथ औषधयः निर्मिताः भविष्यन्ति। वन्दे मातरम् इत्येतस्य गीतस्य सार्धैकवर्षपूर्तिमुपलक्ष्य गतदिने केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः वन्दे मातरम् इति नाम्ना प्रदर्शनीम् एकाम् उद्घाटितवान्। अत्रावसरे दिल्लीस्थिते इन्दिरागान्धी प्राङ्गणे एकः भव्यः समारोहः अपि समायोजितं गतः। कार्यक्रमे संस्कृतिमन्त्रालयस्य सचिवः विवेकाग्रवालः अपि उपस्थितः अवर्तत। अत्र समारोहे केन्द्रीय मन्त्री उक्तवान् यत् वन्दे मातरं न केवलम् एकं गीतमात्रं प्रत्युत भारतमातरं प्रति समर्पण सम्मानैकतायाः प्रतीकभूतम् अस्ति। वंदे मातरम का गायन हम सब लोग करें, इसको अपलोड करें। वंदे मातरम की एग्जीबिशन जो आने वाले समय में डिजिटली अवेलेबल होगी, इसको देख करके वंदे मातरम किस कंटेक्स्ट में लिखा गया था, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे उसकी रचना हुई, किस तरह से वंदे मातरम ने जो है देश की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन देशभक्त हुतात्माओं जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया था, उनसे प्रेरणा लेकर के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमें देश को विकसित करना है। इस संकल्प के साथ में जुटे, इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। गीता मनीषिणः स्वामी ज्ञानानन्दस्य सान्निध्ये गीता ज्ञान संस्थान द्वारा गतदिने ऐषमः युव गीता शिखर सम्मेलनं समायोजितं गतम्। अत्रावसरे उपस्थितं गताः गणमान्याः गीता संदेशं प्रकाशितवन्तः अथ उक्तवन्तः यत् गीता प्रत्येकमपि कठिनपरिस्थितौ मार्गं प्रदर्शयति। एषः ग्रन्थः सार्वदेशिकः, सर्वमान्यः अथ सार्वकालिकः ग्रन्थः अस्ति। सम्मेलने गीतायाः ज्ञाने केन्द्रितानां प्रतियोगितानां विजेतृभ्यः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। सममेव कलाकारैः सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि प्रस्तुताः। युव गीता शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानन्दः उक्तवान् यत् गीता ग्रन्थः मानवेषु निगूढां क्षमतां प्रकाशयति।
गीतायाः सन्देशः दुर्योधनविचारशमनम् अथ अर्जुनविचारजागरणम् इति अस्ति। एक सार्वभौम प्रेरणा है भगवत गीता, सदा के लिए, सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं, जाति वर्ग वर्ण ऊंच नीच देश प्रदेश कोई भेदभाव नहीं। गीता आपके अंदर की एबिलिटीज कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज को जीवंत करके ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है कि धीरे धीरे आप स्वयं एक आदर्श बन जाए। हम सबके भीतर स्वामी विवेकानंद है, हमें उस विवेकानंद को अंदर से जगाना है, दुर्योधन की सोच को दबाना है, अर्जुन को जगाना है। युव गीता महोत्सवे एतस्मिन् मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः केन्द्रीय मन्त्री मनोहर लालः कथितवान् यत् गीता ग्रन्थः अस्मान् देशभक्तिं शिक्षयति, संकट समये अस्मभ्यं समाधानं प्रददाति। असौ इतोपि कथितवान् यत् जगति अनेकेषु देशेषु संघर्षः प्रचलति, परं भारतसमीपं जीवन्तु जीवयन्तु च इत्याख्यः मन्त्रः अस्ति, अथ एषः मन्त्रः गीताग्रन्थेन एव प्रदत्तः अस्ति। दुनिया के बहुत देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के भी होड़ में हैं और दूसरे देशों पर प्रभाव जमाने के भी होड़ में हैं। ऐसे अवसर पर जब वो भारत की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि भारत में कोई विशेष ऐसी बात है कि बिना किसी ऊहापोह के एक लोकतंत्र के नाते से इतने लंबे समय से यहाँ सब ठीक चल रहा है या कोई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष के लोगों का, नेताओं का, यहाँ के मुख्य समाज का, संतों के आशीर्वाद से और गीता जैसे ग्रंथ के उपदेश से हमको वो एक विरासत प्राप्त है जिसमें से हम इन संघर्षों में से भी अपना रास्ता निकालते हैं। हमारे यहाँ वाक्य दिया गया है, जियो और जीने दो। युव गीता शिखर सम्मेलने उपस्थितः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य सहसरकार्यवाहः अरुणकुमारः कथितवान् यत् गीता ग्रन्थः एव एकः ग्रन्थः यस्य जयन्ती परिपाल्यते। अनेकासु भाषासु गीता ग्रन्थस्य अनुवादः सञ्जातः। एषः ग्रन्थः सार्वदेशिकः, सर्वमान्यः, सार्वकालिकः च अस्ति। ये गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए है, जो संप्रदायों से समाज को बांटकर जो देखने की दृष्टि रखते हैं उससे ऊपर उठकर इस ग्रंथ की रचना हुई। यहां तक कि जो ईश्वर को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, जो अध्यात्म को नहीं मानते, उनको भी ये ग्रंथ स्वीकार है। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।